Hello all. I can see some of my students and Priyanka ma'am student, as I already said. Firstly, I would request everybody to switch on their cameras. I don't want your faces to be the one which is showed on the slide. I want your faces to be brighten up. And by the end of the session, I wish to clear all your questions. We wish to clear all your questions. So please uh, keep the cameras on so that I can see your faces. If any issues occur, you can surely switch off your cameras, but it will be great if I can see you. For any doubts or any questions, you can keep the microphone on and raise your hands. We'll take your questions. Hi, Pushpi. Hello, ma'am. We can see that I Good will morning, request. sir. Okay, so I can see few of them have not kept their cameras on. We would be really able to connect if you keep your cameras on. And as sir said, it's okay if there are any network issues, you can switch it off for that much time. But it would really help us understand whether you are getting our point or no with your expressions, of course. Okay, sure. Shall we go ahead, sir? Yeah, sure. So let's address the big question. The reason why you all are here. You all have mostly so-called cleared your 10th. 10th khatam ho gaya abhi. All of a sudden, till last week, you were in grade 10th. You were about to appear your exams. But right now, you all have cleared 10th. That might be good for some, that might be bad for some. Whatever it is, let's address that. What we should do from here on is the big question. So firstly, let me introduce to my fellow teacher. We have Priyanka ma'am. So she's my colleague. She was my friend, and we have studied bachelor's and master's together. And right now, she is my partner in this seminar. So we actually planned this session for our past students or current students who were facing a lot of issues this year, and they were going through a lot of stress कि exam कब होना है, क्या करना चाहिए, कैसे करना है. So it was great that we could meet together, we can club our students, and then we can address to all of them individually. So about Priyanka ma'am, she has experience of more than 5 years, and she has also worked as an embryologist at Orion Fertility, Andheri. Then she has been teaching in various classes like Eureka, Mile Achievers, Excellence Academy, Akar Academy, A Plus Edu Hub. So across overall Mumbai, she has been teaching from the last 5 years. She has also produced international rank holders in English Olympiad. She is currently teaching students or also person who are working. She is giving English coaching to them for the GRE, IELTS, and TOEFL. So let's welcome Priyanka ma'am. Priyanka ma'am, thank you for joining us. And she has also privately tutored many NEET students and many pharmacy students for MST CET. And currently also she has many students from all the boards for biology and science. Thank you, sir, for that wonderful introduction. Okay, so I would just return back the favor and would like to introduce sir. We share the same degree as you can see. He is also bachelor's in microbiology and master's in life sciences. He has worked in so many different classes from Sinhal, JDCs, Danis, Wheel, Nayak, Sai, Dynamic Ayojana. You can see he has a long list of places he's worked at. He's 7+ years of teaching experience, and not just in college section but also in school section where he takes science. The best part about his science lectures are you will literally feel that you are in a lab. Even if you are in a theory lecture, you will feel that you are in a lab because he believes in teaching science via experimentation, right? And if you are his student, you've already experienced this particular thing. And if you are not, I'm sure you will see this more often that he has different ways to explain you the simplest of science concepts. Uh, yeah. He has also privately tutored numerous students from 6 to 12, all boards. And in fact, a lot of his students are currently doing MBBS and
BDS in colleges all across Maharashtra. So I will welcome you, sir, and the further session will be continued by him. Over to you, sir. Thank you, ma'am. Okay, let's go with the trend. आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है फोटोज पे इंस्पिरेशनल कोट्स लगाने का. So even we have tried this. So whatever is written here, let me just read it out to you. If you do what you love, you'll never have to work a day in your life. Okay. Now try to read between the lines. इसमें लिखा है कि जो आपको पसंद है, if you do that, you will feel that you are doing no work throughout your life. But this quote is only good when you are working at a very high position and you have achieved everything. Okay. मैं वही करता हूँ जो मुझे पसंद है. या तो either you do the things that you love or you do the things and you love it. That's it. That's as simple as that. For doing the things that you love and to earn out of it, it is very difficult. You have to have that passion, you have to have that zeal, that enthusiasm to do certain things, and that we'll discuss further. Let's see how you can achieve what you love and how you can work out that. So let's tell you about what you already know, the possible career options. You have arts and humanities, you have commerce, you have science, and you have other non-conventional courses. So all this part you already know, the arts, humanities, the commerce and science. Let's talk about non-conventional courses first. What is non-conventional courses? As the name suggests, वो conventional नहीं है, मतलब जो normally लोग कर रहे हैं वो नहीं कर रहे. Either they do what their passion preaches in. So firstly you need to find your passion. Passion क्या होता है, कैसे करना है, how to go about it. So to find your passion, you need to know two things, and that are the things that I like to do and the things that I don't like to do. See, simple सी बात है. If you are someone like me who is not very much keen in making decisions, who cannot make decision easily, eliminate the other possible options. So if I'm going in an ice cream shop, मेरे पास 20 फ्लेवर्स है and I don't know what to select, but I know कि मुझे क्या नहीं खाना है. So मुझे पपाया का आइसक्रीम नहीं चाहिए. I don't want that strawberry vanilla mango वाला. So whatever is left, I will select between that. So you should know what are the things that you love and what are the things that you don't like to do it. So if you're not sure about the first thing, make sure you are sure about the things you don't want to do. So I'll give you my example. When I did my 10th, what I knew was कि आर्ट्स में थोड़ा आर्टिस्टिक क्रिएटिव होना जरूरी है. आपको पेंटिंग आनी चाहिए, आपको कोई तो एक फील्ड में लिटरेचर स्टडी करना पड़ेगा. एंड आई वाज नॉट गुड एट दैट. तो मैंने एलिमिनेट कर दिया कि मुझे आर्ट्स तो नहीं करना है. कॉमर्स में देयर वर बैलेंस शीट्स, देयर वर रिलेटेड टू अकाउंटिंग, एंड आई वाज नॉट इवन गुड एट दैट. तो मुझे वो भी इंटरेस्ट नहीं करता था. So what was left for me was science. So then I took up science. So either you eliminate the other options or you know what you love the most. Now let's see how we can move forward from this. How to follow your passion, as I told you in the non-conventional courses. This 3 images, first is about photography or maybe YouTubing or vlogging or anything. Then you have something called as gaming. आजकल gaming industry बहुत boom कर रही है. There are literally hundreds and thousands of gamers and streamers who are playing online games and earning a lot. And there is digital marketing. You can follow your passion obviously, but my word of mouth will be follow your passion side by side, have a degree with yourself as well. आप ये सारी चीजें कर सकते हो, बट आपके पास एक बैकअप डिग्री होना चाहिए. Right now, if you take any of the top content creators, any of the top bloggers, influencers, so-called gamers, they all have started 4 to 5 years earlier where they are today. They started when there was no such field or no such competition at all. Today, right now, my many students want a YouTube channel. They want to play games. They want to grow like their idols. But it is very difficult because आज competition बहुत है, and you don't have anything new or you don't have that much of time to dedicate here. So it is better कि आप एक डिग्री साइड बाय साइड करो. You can follow your passion and then you can switch to your passion when you feel कि yes, I am earning good from my passion. I can earn this much and I can switch my entire career to this. Let's move forward. Analyze your hobbies and passions and turn them into career. Now, ये भी पता होना चाहिए कि आपकी हॉबी और पैशन क्या है. So if my hobby is collecting coins or collecting stamps, मैं उसको करियर नहीं बना सकता हूँ. For that मुझे
रूम भर के या घर भर के कॉइन या स्टैम्प हो गए, तब जाके शायद मैं म्यूजियम खोल पाऊँ और तब म्यूजियम में लोग देखने आए. But I can't convert that into my career, right? So either I need to find something which I love, I need to take up a subject which I'm keen, which I'm interested in, or take subjects that you don't hate. That's simple as it is. Let's move forward to the next slide. There is something called as SWOT analysis. How to do this? कैसे पता करें कि passion क्या है? There are 4 things. SWOT stands for strengths, weaknesses, opportunities, and threats. See, this is not the slide that you will see for the last time. ये आपको आगे भी आपके लाइफ में बहुत ये सुनने में मिलेगा, SWOT analysis. Be it your studies after 12th, or be it your first job, or be it your any other job, आपको ये वर्ड बहुत सुनने मिलेगा, SWOT analysis. SWOT analysis होता क्या है? First is your strength, then weaknesses, opportunities, and threats. So मुझे पता होना चाहिए what my strength is. So for me, I loved science, I loved maths to a certain extent, and I was very keen in knowing certain things. So मुझे बहुत पसंद था वो so called जिज्ञासा या curiosity थी to know certain things. So that was my strength, but my weakness is what I was not good at remembering names. मुझे वो बड़े बड़े नाम नहीं याद होते थे. I did not know how to draw diagram. So that was my weakness. Opportunity, I knew कि मेरा सब्जेक्ट जो है साइंस, दैट हैज सर्टेन अपॉर्चुनिटीज, वो उसके रिलेटेड करियर ऑप्शंस क्या है, एंड अकॉर्डिंगली आई कैन मूव फॉरवर्ड टू इट. एंड थ्रेट इज व्हाट इफ वो नहीं हुआ, डू आई हैव अ बैकअप प्लान? अगर मेरे से ये फील्ड नहीं हुआ तो वेदर आई कैन स्विच टू एनी अदर फील्ड और आई कैन डू समथिंग इन दैट. सो दैट वाज माय थ्रेट. सो इन जनरल यू शुड नो व्हाट योर SWOT एनालिसिस इज. व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, आप एक पीस ऑफ पेपर लो, उस पे आप लिख सकते हो कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स पसंद है, व्हाट सब्जेक्ट्स यू आर वीक एट, and how opportunistic you are to work on those subjects that you love, and what is your threat. अगर ये नहीं चला तो आपके पास ऑप्शन बी क्या है. All these things you should know if you are selecting a career. We'll move forward to the next slide. Let's talk about arts or humanities. Arts as in जो state board वाले हैं वो arts कहते हैं, humanities CBSEs, ICS people call it humanities. Let's see the myth related to it. That arts stream is for dimwits, it is for dumb people. जिनको low score आता है वो arts लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. And art is not all about drawing and painting. ये myth है, ये गलत भावना है जो हमें पता है कि ये drawing और painting होता है arts में. नहीं, that is not true. Let's see then what art consists of. So you have 3 different types of arts. You have visual arts, then you have something called as performing arts, and then you have something called as literary arts or literature arts. Visual arts में you have painting, sculpting, drawing. You can learn this. आप technique सीख सकते हो. You can learn cultures. You can learn performing arts like music, dance, and drama. There are actually schools and institutes who teach you music. So if you have any acquaintances, आप किसको जानते हो जो भरतनाट्यम सीख रहा है या जो म्यूजिक सीख रहा है, there are different exams that you need to clear. There are different dance forms that you need to crack. Also drama, there is National School of Drama. Okay, then there is IIFT where you can learn how to act, how to express yourself. Then you have literary arts like languages, literature, philosophy, where you can study history, law, humanities, and other subjects like geography and political science. ये सुनने में काफी बोरिंग लगता है, right? But trust me, for people who are appearing UPSC or other administrative exams, this literary arts is the main crux subject there. If you want to do any government related field जो आपको so called civil services करनी है, तो उसके लिए literary arts जानना बहुत जरूरी है. And it is not at all that much of boring. जितना नाम boring, अरे हिस्ट्री में क्या पढ़ना, you actually learn the history from the other point of view. तो अगर मैं यहाँ की हिस्ट्री में पढ़ रहा हूँ how Britishers exploited us, तो Britishers क्या पढ़ते हैं उनकी हिस्ट्री में, वो भी हम पढ़ते हैं. तो उनके हिस्ट्री में शायद ये बताया जाता होगा कि इंडिया को कैसे हमने डेवलप कर दिया, हाउ वी डेवलप द एंटायर वर्ल्ड, हाउ वी ब्रॉट अबाउट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. So it is always 2 sides of a coin, and then you have to make projects, you have to attend seminars, and there are many number of things. We'll see forward what other things are related to arts. How you can go about it? You can do 11 12 from any board. Specifically for arts or humanities, you can take IB board, ICSC board, CBSE board, or state board HSC, and the boards are arranged in the decreasing order. So IB is the most complex board, ISC is the second most complex board,
followed by CBSE and HSC. CBSE HSC is more or less same, I could say here, because see, the point here of complexity is not कि वो ज़्यादा hard है या वो ज़्यादा difficult है, ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है. The syllabus is still the same, but CBSE and HSC they have their own prescribed textbooks, जो IB और ISC के केस में नहीं है. Okay, so after 12th you can choose your subject wisely. You can take up arts or humanities if you're interested in this 4 subjects. Let's move forward. So you have 3 years of bachelor's, that is graduation, and then you can do 2 years of master's. So there are certain subjects like psychology, okay, where you can do MA in psychology and you can be a counselor. You can also be a lawyer. There are culinary arts. You can also be a chef. You can learn. See, there is 2 things. There is hotel management and there is culinary arts. Hotel management mein you learn everything along with cooking, whereas culinary arts mein you learn about cooking, how different cultures prepare their food, the history behind it, the story behind it. So it is more similar to arts. Here I have kept it under arts because it is an advantage if you know certain philosophies or certain literary arts of subjects to be a culinary artist or you to be a chef. You can also be a counselor, a lawyer. Let's start with the next field, that is commerce. A lot of you have filled commerce, so from the form, the reason of you guys to make you fill that form was so that we know what all things we need to explain to you and get your doubts cleared. So in commerce, let's talk about the myths that commerce is all about. We will have the question and answer sessions after the session, so we will discuss everything. We'll all take all your questions. Money matter के भी questions हम लेंगे. देखो, in just a short thing, पैसा हर जगह पर है. It is about how you earn it, and you should know कि आप कौन से चीज में उसको inculcate कर सकते हो. So ऐसा नहीं है कि आर्ट्स में पैसा नहीं है या कॉमर्स में बहुत ज्यादा पैसा है, साइंस में तो बहुत ही ज्यादा पैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है. Okay, I have my colleagues who have done arts, who have done MA in psychology, and they are earning very well. They are counselors, they are lawyers who are earning very well. तो पैसा कमाना is totally different thing, और वो आपका 12th 15th के बाद स्टार्ट होगा, where you will take your option. Right now if you are in 10th grade, आपका बस चॉइस होना चाहिए कि आपको आगे क्या करना है, कौन से फील्ड में जाना है. Let's see the myths about commerce. It is all about CA and MBA. No, सिर्फ CA और MBA नहीं कर सकते. Obviously, they are professional courses. They are the courses which most of the people opt for. Maximum लोग CA, MBA करते हैं commerce के बाद, but वही 2 courses नहीं है. और if you are bad at math, you cannot do commerce. ऐसा भी नहीं है. There is literally option. You can drop maths and take SP, that is secretarial practice. तो जैसे बायो ड्रॉप करके मैथ्स ले सकते हैं या मैथ्स ड्रॉप करके बायो ले सकते हैं, वैसे उसी तरह से इफ यू आर टेकिंग 11 12 कॉमर्स और आपको मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप मैथ्स को ड्रॉप कर सकते हो. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. क्या क्या कर सकते हैं आफ्टर 12th? देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोर्सेज इफ यू टेक कॉमर्स. So there are mainstream courses, professional courses, commerce without maths wala course, and you have something called as BCom honors, जो normally 3 years का BCom होता है, and then you can switch on to any other field. Let's discuss about the professional courses and the mainstream courses. So in professional courses, you have chartered accountancy, that is CA, company secretary, and CMA. Apart from that, you also have international courses, that is called ICWA. CA, CS, CMA, they all have entrance exams. So after 12th, you need to appear for CPT or CET, that is common proficiency test or common entrance test. आप चाहे CA करो या CS करो, you need to give that entrance exam. And this course is given by an institute. तो ये कोई government affiliated course नहीं है. कार्तिक, बैंकिंग के लिए भी मैं बताऊंगा. विल डू वन थिंग, हम ना सेशन के बाद एक साथ सारे क्वेश्चंस दे लेंगे, तो जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में पॉपअप होते हैं, या तो आप लिख के सेशन के एंड में जब हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे तब पूछ सकते हो. ओके, दैट टाइम इट विल बी मोर क्लियर. आपके डाउट्स में और अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ. सो फॉर चार्टेड अकाउंटेंसी CS, यू हैव एंट्रेंस एग्जाम एंड दिस कोर्सेज आर डिफिकल्ट. CA का अगर बात करें, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कोर्सेज. Like passing percentage काफी कम है, less than 2% of people clear the entire CS. So it is one of the most difficult exams.
और एंट्रेंस के बाद बहुत सारे लेवल्स होते हैं. आफ्टर देन यू बिकम सीए, बट ये सारे कोर्सेज आफ्टर 12th है. सो आपके पास 11th 12th 2 साल का विंडो होगा टू नो मोर अबाउट दिस कोर्सेज. ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. Then you have mainstream courses where you have Bachelor of Commerce, Bachelor of Accounting and Finance, then BBA, that is Bachelor of Business Administration, BMS and BMM. Banking and Finance में आप फाइनेंस सीख सकते हो, बैंकिंग सीख सकते हो. जो मिस्टर कार्तिक ने हमसे पूछा था कि अकाउंटिंग और बैंकिंग से रिलेटेड फील्ड में आप BAF कर सकते हो. ऑल्सो यू कैन डू BCom एंड देन अपियर फॉर डिफरेंट एग्जाम्स ऑफ बैंक्स. ऐसे पर्टिकुलर बैंक्स के भी कुछ एग्जाम्स होते दैट यू नीड टू क्लियर, तो वो भी आप BCom करने के बाद भी कर सकते हो. सो यू टेक एनी ऑफ द 4 कोर्सेज व्हिच आर मेंशन्ड हियर एंड यू कैन कंटिन्यू इन बैंकिंग. ओके, और ऑल्सो यू कैन डू अ स्पेशलाइजेशन इन अ पर्टिकुलर कोर्स. जैसे मैंने सपोज एक पर्टिकुलर फील्ड में इकोनॉमिक्स में कर लिया या अकाउंटिंग में बैचलर्स कर लिया, so that will give me an extra edge over it. The last course which I've mentioned here is BMM, that is Bachelor of Mass Media. This is related to journalism. This is related to journalism, where you can learn about all the print media, the social media, not exactly social media, but a part of social media. किस तरह से न्यूज प्रेजेंट करना है, किस तरह से टीवी मीडिया में किस तरह से बनाना होता है, हाउ डू यू मेक कॉन्सेप्ट, हाउ डू यू शूट इट, हाउ डू यू एडिट इट, हाउ डू यू गेट योर स्टोरीज. CS में भी यू हैव एंट्रेंस एग्जाम. ओके, कंपनी सेक्रेटरी, दैट इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू CA. उसका भी पैटर्न CA से सिमिलर है, बिकॉज CA का जो इंस्टीट्यूट है और CS का इंस्टीट्यूट है, दे आर प्राइवेट इंस्टीट्यूट. तो इसमें गवर्नमेंट आपकी एग्जाम नहीं लेती या कोई बोर्ड एग्जाम नहीं लेता. देयर इज अ मेन इंस्टीट्यूट जो सारे कॉलेजेस में फॉर्म्स देगा और वो एग्जाम आपको वो इंस्टीट्यूट से देनी होती है. तो उसका भी पैटर्न काफी सिमिलर है CA से. यू विल हैव योर एंट्रेंस एग्जाम एंड देन इफ यू क्लियर दैट यू विल हैव 1 or 2 groups to clear and then you will have your CS final. Okay, so again that is also after 12th, but 12th तक आपके पास काफी सारा नॉलेज हो जाएगा about what courses to field, because right now you don't know the subjects of commerce. उसमें क्या content है ये आपको नहीं पता है. So in the 2 years you will learn about the concepts and then you can apply to the respective fields wherever your interest lies in. Okay, okay, let's move forward, ma'am. What is MBA? MBA क्या होता है? Let's see. It is basically Masters in Business Administration. ये पहले MBA ही था, अभी BBA भी है. So you can also do a bachelor's degree and then apply for master's degree. And MBA is the umbrella term for management in every sector. So आप pharmacy करके भी MBA कर सकते हो. That is called as pharma management. उसके लिए भी colleges है, उसके लिए भी काफी scope है. You can be a MBA at a multinational company. You can be a MBA at any health related sectors. You can manage a sports team as well. There are courses जहाँ पर sports management सिखाया जाता है, जहाँ पर आपको एक टीम को मैनेज करना है कि कौन से स्पॉन्सर्स लाने हैं, कौन से कोचेस लाने हैं, कौन से प्लेयर्स लाने हैं, ये सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हो. उसके लिए भी कोर्सेज है हमारे पास. ऑल्दो दिस कोर्सेज आर ऑल न्यू, बट MBA इफ यू डू MBA, और MBA सिर्फ ऐसा नहीं कि आप कॉमर्शियल बैकग्राउंड से ही MBA कर सकते हो, साइंस लेके या आर्ट्स लेके भी आप MBA कर सकते हो. दैट इज अ कॉमन अम्ब्रेला टर्म. एंड एज फार एज योर क्वेश्चन इज कंसर्न कि कौन सा ज्यादा इजी है, इजी दोनों में से कुछ नहीं है. CS एंड CA बोथ रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, और ये ऐसा नहीं है कि एंट्रेंस किया और क्लियर हो गया. दैट इज द मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड कॉमर्स. कॉमर्स में एंट्रेंस शायद निकल जाएगा, उसके बाद वाले ग्रुप निकलना डिफिकल्ट होता है, एंड साइंस में एंट्रेंस डिफिकल्ट है. इफ यू एंटर इनटू एनी फील्ड, IIT और मेडिसिन, इफ यू एंटर इट देन 5-6 years में अगर आपको ड्रॉप होता है या आप फेल भी होते हो तो आपका क्लियर हो जाएगा आगे इन द अपकमिंग फील्ड. Himani will talk about science, don't worry. Right now we are just doing about commerce. Let's come to the question of CA versus CS. If you ask me, both are equally tough, but clearing CA is difficult because CA का passing percentage is very less compared to CS. So CA में as I told you around 2% result आता है, whereas CS में वो number थोड़ा सा ज्यादा है. तो difficult दोनों है, but pass होना ज्यादा easily हो जाएगा CS में compared to CA. But both have equal value. दोनों में बहुत सारा so called पैसा है, जो किसी का question था. So this is about MBA.
and I'll hand it over the session from here to Priyanka ma'am. Priyanka ma'am will continue about the science stream. So whatever questions you have for science stream, I would suggest कि आप पहले पूरा सुन ले और बाद में एंड में जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तब हम क्वेश्चंस कर सकते हैं. So that will be better so that I can take up your individual questions. So I'll hand it over to Priyanka ma'am now. She will continue from here. Over to you, Priyanka ma'am. Thank you, sir. I would like to add, before I start with the science part, I would like to add to to the question that I think Sonu asked, that CS and CA, the difference lies in the fact that CA is more practical based and CS is more theory based. So you have to analyze, as sir said, that you have to do the SWOT analysis. You have to analyze that what you are good at, right? आप कौन से चीज में अच्छे हो, थियोरी में ज्यादा अच्छे हो या अकाउंटिंग और वो सब में ज्यादा अच्छे हो. Accordingly, you can decide what you want to go for. Toughness का तो criteria sir ने बता ही दिया है. Okay, so let's continue. I'm sure some of you all are waiting for the science stream. Himani had asked the question, and even a lot of you all I saw in the Google form that you all had filled science as your stream of interest. So undoubtedly, science is one of the most popular field, I would say, because the reason being, science is something that gives us the answers to our how and why, right? English language में 4 questions major है: when, where, how, why, right? ये सबसे बड़े 4 questions है. उसमें से जो why and how है ना, उसका आंसर हमें साइंस से मिलता है कि कोई चीज ऐसा क्यों होता है. So it is a fascinating field from the time you start studying it. When you come to know, अच्छा okay, ये acid है, ये base है, इसके लिए इनो 6 seconds में काम करता है, right? तो वो सारे जब ये आंसर्स मिलते हैं ना, तो अपने आप we get attracted to that field, क्योंकि हमें वो आंसर्स दे रहा है कि यूनिवर्स ऐसे क्यों काम कर रहा है, right? Apart from being one of the most popular, it's also the most flexible. Now, why am I saying this flexible thing? Because if you take science, you can come back to commerce or art, but it does not go the other way around. Science लेके commerce में आ सकते हो, arts में भी जा सकते हो. Commerce लेके आप arts में जा सकते हो, but commerce से आप science में नहीं जा सकते हो. It goes like that, right? So, in terms of that, mostly people continue with it. But in case if somebody is not able to cope up, then they have that option. The option is open that you can change your stream. Okay. Now I'm sure with this whole social media and the whole buzz around the question that क्या करे अभी क्या करे. Of course, science is a very popular thing and it is something that we all are tempted to take. But I will only give you one word of advice. Don't do it because it is popular. Do it because you like it. Only do it if you like it, right? Just because every other YouTuber or blogger out there is an engineer or a science student doesn't mean that you do it for that. आपको पसंद है, जैसे सर ने बोला, वो SWOT analysis, that is the most important thing to analyze your career. तो अगर आप वो करते हो और उसमें ऐसा आता है कि हाँ मुझे ये सब्जेक्ट ज्यादा पसंद है, मुझे ये पार्ट ज्यादा पसंद है, राइट? साइंस में आपको ये भी ऑप्शन है. Pardon the ambulance sound that is coming from the background. My house is quite near to a hospital. So अगर आपको आप करते, if you get into the SWOT analysis and you see कि मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है, फिजिक्स और मैथ्स पसंद है, then you go towards engineering. First of all, you have to narrow down to science. फिर science में आके भी आपके पास possible options है, right? What are the avenues in science? Medicine and pharmacy, engineering, and pure science, right? Don't worry, I know that you all might have heard the pure sciences term for the first time. ये दोनों तो सुना ही होगा, but we will discuss each of them in detail, right? But analyze कैसे करोगे कि कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें लेना है. engineering करना है तो physics और maths बहुत अच्छा होना चाहिए, तुम्हें पसंद होना चाहिए first, and you should be good at it, right? apply करने आना चाहिए. Then medicine, if you love bio, right, if you love learning about the human body and the things around it, then you do medicine. If you are interested in chemistry, more inclined towards chemistry, then pharmacy is your option of choice, right?
So these are, I have just given you a very broad overview. Let's look at them, each of them in detail. Now let's come to the medical field. A lot of you all have felt that you all are interested in medicine and you all want to pursue NEET. The craze around it revolves from the fact that the thing that we feel कि ये profession है जिसने हमें बहुत सारे one of those professions है जिन्होंने हमें संभाला है ये pandemic में, right? Doctors है, yes, computer science also, math should be good. You need to have the subject of math, right? We will discuss all your questions later. Even if we are talking in very brief right now, we'll give a proper brief overview, a detailed overview of all the subjects. Sure. I have all these questions in mind. We will go through it at the end of the session. Okay. So let me first complete medicine. मैं engineering के जो 2 aspects आपने पूछे हैं ना, वो मैं engineering पे आके solve करती हूँ. First medicine, ये जो अभी का जो situation है उसमें we have all been thanking the doctors कि वो लोग नहीं होते, the policemen, doctors वो लोग नहीं होते तो शायद हम अभी survive नहीं करते. तो ये profession ने हमें संभाला है and that thing to कि नहीं कुछ करना है society के लिए, that drives people to come into this profession which is called as the noble profession. You have to clear the entrance exam of NEET. UG there stands for undergraduate. NEET के आप अलग-अलग avenues में जा सकते हो, अलग-अलग streams, ये सारे medical streams है, right? जैसे MBBS is the normal physician, BDS is the dentist, H stands for homeopathy, Bachelor of Homeopathy Medicinal Science. A stands for Ayurveda, and this is physiotherapy. So MBBS, BDS ये सारे options available है, सबके लिए एक ही entrance test है और of course cut off भी मैंने proper ऐसे order में ही arrange किया. सबसे ज़्यादा MBBS का cut off होता है, then BDS, right? ये one of the toughest exams है, agreed, but of course you need hell lot of hard work for this. But I'll tell you something shocking. ये 720 marks का जो exam होता है ना, last year इसमें 720 out of 720 आया था 2 students को, right? It is one whole benchmark. ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी को 720 out of 720 मतलब entrance में इतना out of आए. तो ये benchmark achieve हुआ and it was a whole new range. मतलब बच्चे इतना पढ़ रहे, people are putting in that much amount of hard work, right? Let's discuss the pattern. 720 marks जो है उसमें से 180 marks go for physics, 180 for chemistry. Physics, chemistry मिला के तुम्हारा 360 marks, ठीक है? उसके बाद botany, zoology. Botany मतलब क्या? Study of plants. Zoo मतलब क्या? Study of animals. ये दोनों part तुमने science में experience किए हैं. You have seen them even in ICSE, CBSE. You have those separate sections. State board में भले ही science 1, science 2 है, but you have studied both of these subjects somewhere at your school level also. तो ये दोनों मिला के 360 marks होता है, right? ऐसा particular distinction नहीं है कि 180 इसका 180 इसका, मिला के 360 marks है. And अगर मैं पूरा combine कर दूं तो bio कितने marks का हो जाएगा? 360 marks. Okay? This is your NEET. Let's discuss about the pattern. It happens once a year. But अभी बोल रहे हैं the council is deciding कि once a year से twice a year करते हैं क्योंकि JEE का भी pattern change हुआ है थोड़ा. तो ये भी बोल रहे हैं कि NEET को once से twice करने का सोच रहे हैं, fix नहीं है. Mode of exam is offline, pen paper based exam है. अभी वाला NEET अगस्त में है और ये वो मतलब एग्जाम बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे, NEET कैंसिल नहीं होगा because it's a very important exam. Type of question, MCQ based और objective based question. अभी जब भी मैं ऐसे बोलती हूँ ना MCQ तो स्टूडेंट्स are like अरे मिस MCQ तो इजी होता है, ऐसा जय माता दी करके हो जाता है. नहीं, इसके MCQs काफी अलग आते हैं क्योंकि वो लोग तुम्हें 2 चीजों पे टेस्ट करते हैं. एक चीज है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, ये फर्स्ट चीज है.
सेकंड चीज है वो कॉन्सेप्ट को तुम अप्लाई कर सकते हो। तो व्हेन यू आर इन नीट, व्हेन यू आर सॉल्विंग एनी एंट्रेंस, हर एक एंट्रेंस कोई भी हो, वो सीए का हो या सीएस का हो या मेडिसिन या इंजीनियरिंग, विल टेस्ट यू ऑन योर एबिलिटी टू अप्लाई योर नॉलेज, कि तुमने जो पढ़ा है उसको तुम एक्चुअली अप्लाई कर सकते हो कि नहीं। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बट तुम्हारा नॉलेज एकदम थरली वो लोग चेक कर लेते हैं, ये चीज राइट। +4 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर। अभी इसके लिए उसके मार्क्स थोड़े 720 इसके लिए होता है बिकॉज हर एक क्वेश्चन इज फॉर 4 मार्क्स, इसके लिए ज्यादा मार्क्स है। ये तो ठीक है, बट जो इसके बाद है ना, दैट इज द मेन थिंग। अगर गलत किया तो नेगेटिव मार्क्स, राइट। एंड दिस इज द की टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एग्जाम, क्योंकि क्या होता है व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज, कि हाँ चलो मार्क्स तो कुछ तो राइट आ ही जाएगा, तो क्या करते हैं हम, यू नो, वी जस्ट फ्लू। दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन नॉट फ्लू। तुम फ्लू नहीं कर सकते, ऐसे जय माता दी ऐसा नहीं कर सकते, राइट। टोटल क्वेश्चन in we will discuss all of this in the end, okay. Now coming to NEET versus MHT CET, ये भी एक पॉपुलर क्वेश्चन है कि NEET और MHT CET में क्या डिफरेंस है। NEEट इज मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। पहले क्या था पता है कि कोई भी, मतलब तुम्हें मेडिसिन करना है, फार्मेसी करना है, इंजीनियरिंग करना है, सबके लिए एक ही वो था, एक ही एंट्रेंस था, एंड दैट वाज MHT CET। और बाकी मतलब वो स्टेट लेवल था और बाकी सारे नेशनल लेवल थे, राइट। बट अभी वो लोग ने क्या किया है, मेडिसिन मतलब डायरेक्टली तुमको नीट ही देना पड़ेगा, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। देन कंपेयर टू दिस MHT CET एंट्रेंस इज फॉर फार्मेसी, राइट। जो मैंने बोला कि फार्मासिस्ट क्या होता है, अभी ये भी एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि फार्मासिस्ट कौन होता है। व्हेन यू गो टू अ मेडिकल स्टोर, तो पता है एक लैब कोट में बंदा होता है, एक शॉपकीपर तो होता है, या आई नो, बट एक लैब कोट में बंदा होता है, उसके पास एक डिग्री होता है विच इज बी फार्म, बैचलर ऑफ फार्मेसी, राइट। तो उसके पास लाइसेंस है खोलने के लिए, मेडिकल स्टोर खोलने के लिए वो लाइसेंस होना जरूरी है। तो एटलीस्ट एक पर्सन होता है, या तो वो लोग खुद फार्मासिस्ट होते हैं या तो किसी को हायर करते, समझ में आया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज फॉर इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन महाराष्ट्र। नाउ कमिंग टू NCERT टेक्स्ट बुक बेस्ड प्रिपरेशन। ये NCERT कौन से बोर्ड की टेक्स्ट बुक है, CBSE बोर्ड, राइट। तो इसके लिए नीट का जो सिलेबस है वो NCERT टेक्स्ट बुक बेस्ड है। तो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कम एंड आस्क अस के हम लोग ICSE बोर्ड में should we shift to CBSE, we recommend that you do, because इसके लिए तुम्हारे पास एक प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक है कि ये टेक्स्ट बुक है, ये बोर्ड की टेक्स्ट बुक है, यही पढ़नी है। ISC जो 11th-12th ऑफ ICSE वो ISC बोलते हैं। तो ISC में क्या हो जाता है, यू हैव डिफरेंट ऑथर्स, राइट। तुम्हारे पास अलग अलग ऑथर्स है और तुम्हें मल्टीपल बुक्स रेफर करनी पड़ती है। तो फॉर द सेम रीजन यू it is better that you take a board whose syllabus is aligned with the NEET syllabus, right. उसमें भी syllabus same है but text books multiple है, तो it gets a little complex, right. State board भी ले सकते हो, बस क्या है कि तुम्हें फिर state board और NCERT दोनों text books पढ़नी पड़ेगी, right. यहाँ पे negative marking है as I said, and यहाँ पे negative marking नहीं, राइट। एंड MHT बिकॉज महाराष्ट्र का है तो वो लोग सिर्फ हमारी जो HSC बोर्ड, जैसे अभी SSC था महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, उसके बाद जो HSC बोर्ड है उसकी ही टेक्स्ट बुक देखते हैं, नथिंग एल्स, राइट। यू डोंट हैव टू स्टडी CBSE टेक्स्ट बुक फॉर देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पे तुम यू कैन टेक दैट चांस, इट इज ऑलवेज एडवाइस कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सब मार्क करके आओ, राइट। यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव इन द थिंग्स दैट यू मार्क, ओके। नाउ engineering, there is, what does the word engineering mean? Can you tell me? Can anyone tell me the meaning of the word engineering? Okay, so I will tell it for you all. Engineering means design with innovation. I saw a lot of you all interested in engineering, so it means design with innovation. मतलब क्या कि एक engineer होगा जो ऐसे बोलेगा चीजें तो बन ही रही है, राइट, बट इंजीनियर ऐसे बोलेगा आई कैन मेक इट बेटर। मतलब जो बन रहा है ऑलरेडी
उसको मैं और बेटर बनाऊं. That is what you call engineering, right? Okay, Aryan has said, oh, there are certain messages as well. I get to the questions at the end. Strength and vitality required for sustained physical activity. ये 3 dates वाला definition लग रहा है. Yes, yes. Karthik, you can do that. Direct diploma कर सकते हो तुम. That is what I was coming to. के दो options है engineering करने के. 3 to 4 year diploma. Now, why am I talking about a 3 to 4 year diploma? Because when you talk about this, sorry, when you are in certain colleges like Bhagubhai, ऐसे diploma का duration is 3. ठीक है, but when you are talking about certain colleges like Bhagubhai और Viva college, वहाँ पे 1 साल का बोलोगे ना, ये भी देते हैं, internship भी देते हैं. इसके वजह से it becomes a 4 year course. Normally course 3 years का है, but you can do a 4 year course. So डिप्लोमा इज फॉर स्टूडेंट्स हु आर काइंड ऑफ यू नो, जैसे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि ऐसे सिविल इंजीनियरिंग करना है बट मैथ अच्छा नहीं. यू विल हैव टू डू मैथ इन इंजीनियरिंग आल्सो, मतलब वो तो आने ही वाला है. तुम 11th 12th में थोड़ा बच जाओगे शायद एकदम हार्डकोर कैलकुलस और वो सब से, बट इंजीनियरिंग में भी आपको थोड़ा बहुत, सिविल में हो तो इंजीनियरिंग ड्राइंग करके भी एक सब्जेक्ट आता है, उसमें भी इट इज लाइक ज्योमेट्री ऑन अ मच लार्जर लेवल. So उसके लिए भी you require the knowledge of math and geometry. After diploma, just doing diploma is not enough, क्योंकि तुमने 10th के बाद तुरंत ऐसा डिप्लोमा कर लिया है ना, तो उसका वैल्यू इतना ज्यादा नहीं है. तो हर एक डिप्लोमा स्टूडेंट को डिग्री करना ही पड़ता है, right? तो after that there is a 3-year degree course. Okay, then the other option is what you might already be aware, 10 plus 2 PCM. ठीक है, अभी ये PCM मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ. बायो में क्या था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी. दैट डजंट मीन कि तुम्हें बाकी सब सब्जेक्ट नहीं पढ़ने पड़ेंगे, ये एंट्रेंस के सब्जेक्ट है. आप नीट देते हो तो सिर्फ PCB पढ़ना है, इंजीनियरिंग देते हो तो JEE देते हो तो सिर्फ PCM पढ़ना है, राइट? बट सिर्फ एंट्रेंस के लिए स्टेट बोर्ड या जो भी बोर्ड एग्जाम है उसके लिए आपको इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा. हो सकता है आप PCM ये लो और आपके कॉलेज में आपको बायोलॉजी का ऑप्शन ना मिले तो बायो भी पढ़ना पड़ेगा. सो इट डिपेंड्स ऑन द कॉलेज दैट यू गेट इनटू. वो सारे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स यू विल हैव टू स्टडी वैसे. देन 10 plus 2 मतलब ये 10th के बाद 2 years साइंस स्ट्रीम लेके you can give your entrance, which I will talk about in the next slide, and after that there is a 4-year degree course. Now you will say ये तो बहुत नाइंसाफी है, यहाँ पे 3 साल और यहाँ पे 4 साल सेम ही कॉलेज में बंदा जाएगा, बट फर्क क्या है, इसने डिप्लोमा किया है ना तो ये डायरेक्ट 2nd ईयर से एंट्री मारेगा और ये पर्सन 1st ईयर उसको 4 साल करना पड़ेगा. समझ में आया डिफरेंस? ओके. Tanay has been asking this question very frequently, so I'll just answer him. He's very excited about the pilot thing. If you want to become a pilot, you need a flying license. Okay, so flying license के लिए बहुत सारे अलग अलग वे है. एक है commercial flying license. Commercial flying license मतलब क्या क्या जो मतलब जो भी जेट एयरवेज है या जो सारे एयरवेज है उसमें अगर आपको चलाना है तो you need a commercial license. ठीक है, तो you have to do your graduation, right? And after that you can do you can study from a flying school, independent flying school. फिर लोग ऐसे हॉबी के लिए भी पर्सनल फ्लाइंग लाइसेंस लेते हैं, ऐसे कि मतलब प्राइवेट जेट तुम उड़ा सको, कमर्शियल प्लेन नहीं उड़ा सकते बट प्राइवेट जेट उड़ा सकते हो, उतना पीपल, दैट इज आल्सो लाइसेंस. एंड थर्ड इज एयरफोर्स, राइट? तो गुंजन सक्सेना अगर आप लोग ने देखा होगा मूवी, तो द थर्ड इज द फील्ड ऑफ एयरफोर्स. वहाँ के लिए आपको एंट्रेंस देनी पड़ेगी. द कॉस्ट वेरीज फ्रॉम इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट. इन्वेस्टमेंट तो होता ही है ऑफ कोर्स. इट इज एडवाइज दैट यू डू इंजीनियरिंग एंड देन गो फॉर एविएशन. ऐसे मतलब दैट इज द route to go via it, because then you will have that basic knowledge of how the plane works and everything, right? There is something called as aerospace engineering as well. Also
पायलट बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है फिजिकल एंड्योरेंस. वो लोग बहुत सारी चीजें चेक करते हैं, जैसे आपको स्पेक्स, तो आई कैन नॉट बिकम अ पायलट इफ इवन इफ आई वांटेड टू, आई डू नॉट, बट स्टिल. तो आपको स्पेक्स है कि नहीं, आपकी हाइट सर्टेन लेवल पे मैच करती है कि नहीं, आपका बोन वेट कितना है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर चेक. योर वेदर यू आर अनेमिक और नो, मतलब आपका ब्लड प्रॉपर है या नहीं है ऐसे. तो बहुत सारे फिजिकल टेस्ट भी देने पड़ते हैं. तो yes, Krish has asked a message that whether you require a graduation for pilot, you do require. And कैसा है पता है, लाइसेंस ना बहुत लिमिट, मतलब आपका फ्लाइट लाइसेंस उसमें कैसा होता है, रिन्यू होता रहता है. यू हैव टू रिन्यू इट. तो पायलट ऐसा चीज है जिसमें आपको थोड़ा बैकअप प्लान रखना पड़ेगा. तो ग्रेजुएशन इज द बेसिक थिंग दैट यू कैन डू वैसे. तो इट इज ऑलवेज एडवाइज कि आप एक प्रॉपर बेसिक डिग्री लो और उसके बाद आप फ्लाइंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करो. समझ में आया? लेट्स गो टू एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर इंजीनियरिंग. पायलट के बारे में मैंने बता दिया. इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स, यू हैव हर्ड ऑफ दिस टर्म JEE. ये JEE एक इंस्टीट्यूट है IIT करके जो कंडक्ट करता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम. अभी इसके दो सेक्शंस है, मेन एंड एडवांस. मेन अभी तक ना वो सिर्फ द थिंग अबाउट मेंस वाज अभी तक वो सिर्फ 2 बार होता था. अभी से पैटर्न चेंज हो गया, एज आई सेड, तो वो 4 बार होगा. ठीक है, एक साल में 4 बार होगा. एंड मेंस से आपके लिए 2 गेट खुलते हैं. आई विल शो यू व्हाट दोस 2 गेट्स आर. मेंस फर्स्ट लेवल है ना, तो ये क्वालिफाई किया तो आप एडवांस पे जा सकते हो. ठीक है, ये क्वालिफाई किया तो आप एडवांस पे जा सकते हो. एंड सेकंड गेट इज सब. एडवांस किसके लिए मैं बता देती हूँ. एक इंस्टीट्यूट है IIT करके, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. इट इज कंसिडर्ड द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंडिया एंड ये वर्ल्ड वाइड भी बहुत फेमस है. मतलब इसमें एंट्री मिलना इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस थिंग, बिकॉज जो एग्जाम है, एडवांस जो एग्जाम है, मेंस तो क्लियर हो जाता है काफी लोगों का, एडवांस क्लियर नहीं होता है, राइट. और एडवांस में भी रैंक अच्छा होना चाहिए तो ही तुम्हें मिलता है. तुमने ये 3 इडियट्स में देखा है, जो कॉलेज थी 3 इडियट्स में, दैट वाज एक्चुअली IIT बट उसको ICE नाम दिया था. तो उसमें क्वालिफाई होना इज द बिगेस्ट challenge. And trust me, you can take it from me, my brother is from IIT Bombay. I have seen him like study day in and day out to qualify these exams. And but I will also tell you it is worth it. मतलब जब भी तुम्हें वो मिल जाता है ना, institute, the college is beautiful, it is very nice, it takes care of you in the best way possible with every best infrastructure and all facilities, right. But हर एक पर्सन जो JEE देता है, जरूरी नहीं है कि उसका एम IIT में जाना ही हो. JEE देके तुम दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी जा सकते हो, राइट. तो मेंस जो क्लियर किया, एडवांस, सपोज मेंस क्लियर किया और एडवांस दिया, एडवांस में अच्छा नहीं आया, आपके मेंस के स्कोर के बेसिस पे भी आपको कोई भी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है. आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ 2 व्हिच आर देयर इन मुंबई, BJTI and DJ Sangvi. These are 2 popular engineering colleges in Mumbai. NIT, what does NIT stand for? National Institute of Technology. The nearest of NIT is in Pune. NIT और IIT ये दोनों है ना, हर जगह पे नहीं है, स्पेसिफिक स्टेट्स में है, राइट. तो जहाँ पे IIT है वहाँ पे NIT नहीं है. IIT के बाद NIT का लेवल होता है, बट NIT itself is also very good. Okay. Then coming to the pattern of JEE main, physics, chemistry, math. Now it has 300 marks. ये जो पूरा pattern है 300 marks का होता है. Section A 20 questions. कितने questions है? 20 questions है, MCQ based. ये updated pattern है. अभी थोड़े ऐसे मतलब last week तक something change हुआ है. So this is the new pattern. तुम्हें पुराना pattern भी तुम देख सकते हो क्या था. 20 questions which will be MCQ based, 10 questions which will be numerical based, right. तो numerical based मतलब क्या, तुम्हें
at the end of the problem you will be given a blank, fill in the blank, and you have to put in a numerical value because these are comparatively tougher. तो तुम्हें of course थोड़ा देखना पड़ेगा, मतलब तुम्हें of course ऑप्शन प्रोवाइड किया है वो लोग ने, right? Then here these are MCQ based question. इसमें भी हर एक right question gives you 4 marks and every wrong question will deduct -1. समझ में आया? Okay. If you want, you can screenshot this slide for the pattern. I'll also show you all the neat slide if you want to screenshot it. I hope you all have taken the screenshot. Sorry. Yeah, you all can take a screenshot of this slide as well. Okay, let's move back to okay. Now, if you don't happen to qualify these exams, मतलब ये आपको बहुत tough लग रहा है, तो आप MHT CT एक दे सकते हो जिसमें आपको महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मिल जाएगा. दूसरे भी एंट्रेंसेस है जो स्पेसिफिक, मतलब एक कॉलेज ने खुद का एंट्रेंस रख दिया कि मेरे कॉलेज में आना है तो ये एंट्रेंस देना पड़ेगा. जैसे एक है बिट्सैट, इट इज फॉर बिट्स पिलानी कैंपस, ये जयपुर और गोवा दो जगह पे. फिर वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दिस इज देयर इन वेल्लोर साउथ में है ये, राइट? देयर इज अनदर वन व्हिच इज SRM. ओके, तो ये इंडिविजुअल कॉलेजेस के एंट्रेंसेस है. ओके, जस्ट 1 सेकेंड. Okay, Karthik, you said that somebody entered with your name. Is the problem clear? Karthik, can you unmute yourself? Okay, I think the problem is clear. I cannot see anyone. Okay, let's look at the questions. There have been a lot of pop-ups in the chat. I'm sorry I could not answer them at that moment, but I wanted to finish it up. But otherwise, सबका link टूट जाएगा. इसके लिए मैंने तभी question answer नहीं किया. A repeated question is how many questions are there in NEET? Nidhi has asked it, and I think there was one more person who asked it. It has 180 questions. Total कितने questions है? 180 questions. Am I audible to you all properly? Yes, ma'am. Yeah, okay, perfect. We can hear you. Yeah, in case there is any disturbance, please let me know in the chat. Okay, perfect. Science colleges depend on what you want to do. We do. Krish has asked the question: what are the best colleges for science? If you want to do NEET, if you want to prepare for your entrances, we recommend, like, it is more suitable कि आप कोई nearby college लो, क्योंकि आपको सब कुछ अकाउंट करना पड़ेगा कि आपको इनफ टाइम मिलता है कि नहीं. ट्रैवल करोगे तो आपका टाइम कितना इन्वेस्ट होगा उसमें. ये टाइम पे आपको इन्वेस्टमेंट, ये वर्ड, क्योंकि टाइम इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग, है ना? तो आपका टाइम उसमें इन्वेस्ट हो रहा है, तो you have to have that thing कि आप properly manage करो अपने इसको. Okay, sir has given a suggestion that let's just finish with pure sciences and then we come to the questions, because ऐसे में कोई question miss हो जाएगा, right? So let's come to this. Pure sciences एक बार मैं explain कर लूँ. All your questions will be answered, I promise. But let us just complete with the thing so that आपका एक picture clear हो जाए, उसके बाद हम questions पे jump करें. Okay, is that clear? चलो.
नाउ प्योर साइंसेस, जब भी प्योर साइंसेस बोला था तो आई एम श्योर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आया था कि भाई ये क्या है, प्योर साइंसेस क्या होता है। इसका मतलब है कि जैसे बीकॉम था वैसे आप बैचलर्स इन साइंस करो, राइट। साइंस में आप प्रॉपर नॉलेज लो, 3 साल का कोर्स होता है, सेम बीकॉम बीए जैसे। कौन से सब्जेक्ट्स में आप कर सकते हो, फिजिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है। अगेन आई जस्ट टेल यू, ये 12th के बाद है, इसके लिए कोई एंट्रेंस नहीं चाहिए। आपका 12th का स्कोर मैटर करता है। ये सारे में अच्छी कॉलेज ये मिल जाएगा, सीट्स बहुत सारी है, अच्छी कॉलेज मिलना इज इम्पोर्टेंट इन दिस केस। तो सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेस, मैथमेटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट में आप कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे प्योर साइंस सब्जेक्ट है। व्हेन यू डू दिस, इसके बाद आप मास्टर्स करते हो, ठीक है। मास्टर्स 2 साल का होता है, ऊपर वाले सब्जेक्ट में भी कर सकते हो और कोई स्पेशलाइज सब्जेक्ट में भी कर सकते हो। जैसे न्यूरोबायोलॉजी है, न्यूरो साइंस में इंटरेस्ट है तो यू कैन डू योर मास्टर्स इन न्यूरो बायोटेक्नोलॉजी और न्यूरो साइंस। देन एनवायरमेंट में इंटरेस्ट है तो एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी या मरीन बायोटेक्नोलॉजी। इफ यू आर इंटरेस्टेड अबाउट द ओशन आउट देयर तो वो भी स्ट्रीम्स अवेलेबल है, राइट। तो स्पेशल यहाँ पे आप कोई स्पेशलाइज जोन में भी फोकस कर सकते हो। नेक्स्ट इज PhD which is Doctor of Philosophy. Yes, ये करके भी आपके आगे डॉक्टर आता है, आपके नाम के आगे डॉक्टर आता है। क्यों आता है? बिकॉज आपको आफ्टर डूइंग दिस इज अ 4 year मिनिमम 4 years कोर्स, इट कैन गो बियॉन्ड डिपेंडिंग ऑन योर रिसर्च प्रोजेक्ट। तो ये करने के बाद आपको आपके सब्जेक्ट का थरो नॉलेज आ जाता है, एकदम ज्यादा यू नो योर सब्जेक्ट इनसाइड आउट। सो इसके लिए if you have seen Big Bang Theory, right? If you've seen Big Bang Theory, उसमें it's a popular science sitcom I could say, and उसमें जो सारे characters थे सब PhD थे, and trust me, they are as celebrated and as reputed as any engineer or any doctor. तो इनका लेवल भी सेम ही होता है जितना वो लोग का होता है। ओके, अभी क्वेश्चन आया, कर तो लिया बट प्योर साइंस किया, उसके बाद what is the scope of pure science, right? तो उसके बाद कहाँ पे जॉब मिलेगा या कैसे होगा? One, you can do research. Every company has an R&D department, right? अगर सपोज तुम कुछ खाना खाते हो, राइट, तो वो पता है बार बार ऐसे अपडेट होता रहता है ना विद विटामिन ई, राइट। फेयर एंड लवली तो क्लेम करता है कि भाई वो डीएनए के अंदर जा सकता है। आई डोंट नो हाउ इट हैज सो मच ऑफ पावर टू गो इनसाइड द स्किन एंड देन टिश्यू एंड देन सेल एंड देन डीएनए, बट इट क्लेम्स कि इतना रिसर्च किया है भाई हमने। बट ऑन अ सीरियस नोट, हर प्रोडक्ट का रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है क्योंकि उनको मार्केट में टिकना है। तो उसके लिए ये जो एक्सपर्ट्स है, क्योंकि एट द एंड हर एक चीज एक केमिकल है और या एक एंटिटी है, तो उसको भी नहीं साइंस वाले स्टूडेंट्स ही उसमें प्रॉपर नॉलेज होता है उनको टू रिसर्च ऑन दैट। टीचिंग, यू कैन बिकम अ टीचर, यू कैन टीच बैचलर स्टूडेंट्स जो कॉलेज में बीएससी कर रहे हो उनको पढ़ा सकते हो, मास्टर्स वालों को पढ़ा सकते हो। स्टडी अब्रॉड, कोई कोई यूनिवर्सिटीज लिटरली तुम्हें पैसा देती है टू कम एंड स्टडी देयर, पीएचडी वहां पे करने के लिए। इंडस्ट्रीज, हर एक इंडस्ट्री में देयर इज समथिंग नोन एज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। उसके अलावा वाइन इंडस्ट्री है, सपोज हमने माइक्रोबायोलॉजी ऐसा कुछ किया तो वाइन इंडस्ट्री, फूड प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री, all of these industries. Okay, I have got a comment that voice break हो रहा है, just give me one moment, I'll just change the network and I'll continue. All your questions will be answered, don't worry. We have all your questions. आपके कॉमर्स से रिलेटेड, आर्ट्स से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, डोंट वरी। वंश ने शायद बिग बैंग थियोरी से रिलेटेड बोला कि हार्वर्ड इंजीनियर है और वो डॉक्टरेट नहीं है, बट ही इज एन एस्ट्रोनॉट, सो दैट इज व्हाट इट मैटर्स। I was expecting this कि जिसने देखा रहेगा वो बोलेगा कि सारे कैरेक्टर्स नहीं थे। I knew this thing कि ये तो आने ही वाला है, right? But yes, it's an amazing show.
we will discuss all your questions. Don't worry. Okay. Don't worry, we'll discuss all your questions. We are here to discuss your question. The session itself says the big question. All your questions will be discussed. Rest assured. Okay. So If I my think so. voice Will was lagging earlier, I'll just clear this point that food industry, wine, beverage industry, हर एक industry में ये science वाले लोग होते हैं who are working there developing their products like that. Okay, चलो, I will hand over the dice to Kun sir to discuss the big question on the pandemic. के ये situation में what is going to happen with our careers, and after that I will answer all the questions that you have asked in the chat box. I will surely answer them. Don't worry. okay. You can So continue. how will this pandemic affect us? I think so. It has already affected us a lot. Uh, Imagine this. You're just not just your board exam has been cancelled. जो board exam होती है आपकी 10th standard की, that is your first step towards building your career. यही कैंसिल हो गया है. This is not just your 10th standard. ये पूरा आपका स्कूल का लेखा जोखा था. This was the entire स्कूल सर्टिफिकेट, या आपका एंटायर आपने स्कूल में जो पढ़ा था ये उसका सर्टिफिकेट था या उसकी एग्जाम थी जो अब कैंसिल हो चुकी है. बट वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. व्हाट वी कैन डू फ्रॉम राइट नाउ इज टू सिलेक्ट व्हाट वी आर टेकिंग एंड टू गो ऑन विथ इट. सी, एवरीथिंग हैज हैपेंड इन जस्ट 1 week. एग्जैक्टली कैंसिल नहीं होना चाहिए था, बट देयर वाज नो ऑप्शन एंड वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. Board exams cancel हो गए. We don't know how will they evaluate. CBSE, ICSE schools do give that data every year to the board, whereas that same thing is not very certain or very streamlined for the state board students. So it is difficult to evaluate your results. आपका अभी फिलहाल ये आपका जो स्ट्रेस होगा कौन से कॉलेज में लेना है, कहाँ पर हमें आगे कंटिन्यू करना है, ये थोड़ा सा स्ट्रेस आपको तब तक रोक के रखना पड़ेगा जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता. फिलहाल आपसे ज्यादा स्ट्रेस बोर्ड को है, बिकॉज उनको पूरे स्टेट का या पूरे बोर्ड का रिजल्ट्स प्रिपेयर करना है, जबकि एग्जाम ही नहीं ली गई है. सो दे विल इवेल्युएट एवरीथिंग, दे विल टेक योर रिजल्ट्स, दे विल गिव यू अ नंबर ऑफ मार्क्स और सर्टेन परसेंटेज, एंड अकॉर्डिंगली कॉलेजेस के पास मेरिट लिस्ट लगेगा. Okay, how should you select your college during this time? Till now, I don't think so. This pandemic is going to be over anytime soon. Almost next year तक, at least next year half, काफी time तक ये रहने वाला है. Things won't be as normal as before. So it is better if you take the college which is more approachable to your area. Definitely there are best colleges in science, best colleges in commerce, best colleges in arts, but where do you stay, उसके आसपास जो बेस्ट ऑप्शन है, आई वुड सजेस्ट कि आप वहां पर लो. डेफिनेटली यू कैन टेक कॉलेजेस व्हिच आर फार अवे फ्रॉम योर हाउस, बट आर यू एबल टू गिव दैट मच ऑफ टाइम कि आप ऐसे टाइम में वहां पर जाके सबमिट कर सकते हो, या अगर आप साइड बाय साइड एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप उतना टाइम ट्रैवलिंग में डोनेट करोगे या उतना टाइम रिविजन पे करोगे, तो दैट इज इम्पोर्टेंट. भाईंदर में अच्छा नहीं है कॉलेज. मैंने कहा आसपास देखो आप, आपका जो स्ट्रीम है उसके आसपास अगर अच्छा कॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा दूर जाओ, बट एक्सट्रीमली दूर जाना मैं प्रिफर नहीं करूंगा, स्पेशली दीज टाइम्स. इफ you are not preparing for any entrance exam, surely you can go to colleges which is the best colleges. For commerce there are best colleges at Churchgate, जैसे जय हिंद कॉलेज है, केसी कॉलेज है. if you want a bit more nearer Parla में you have Mithibai college, you have Narsi Monji NM college. So all these are premium esteemed colleges, but right now आपके पास आपका रिजल्ट नहीं है. जब आपका रिजल्ट आएगा तब मेरिट लिस्ट निकलेगा, फिर आपको पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड करते हो. The entire point of board exam is to evaluate everybody जो आपने 10 सालों में पढ़ा है. How will you rank everybody? Okay, Jaimit, I did my 11th 12th in Mithibai College. I also did my bachelor's in Mithibai. I have done my master's in Mumbai University. So वही बोल रहा हूँ, when I was in 11th 12th तभी ये situation नहीं था. I could travel. Right now you guys can't travel. तो अगर आज पैंडेमिक के टाइम पर अगर मैं, मेरा सिचुएशन अलग है. Okay, we'll just take your questions now. Yeah. Okay. Okay, firstly,
whatever your name is, please आप खुद के नाम से आइए तो better है. Okay, now we'll take the questions. I would suggest कि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम्स कर रहे हो तो वो बोर्ड्स को सिलेक्ट कीजिए जहां पर आपको हेल्प होगी. So if you're planning to do engineering or NEET, try if you can take CBSE board because the textbook will be the same. The problem with ICSE and if you're doing MST CET then for sure you can take state board hands on, कुछ problem नहीं है. But अगर आप IIT के लिए try कर रहे हो तो I would prefer specifically for NEET कि आप CBSE का बोर्ड ले. अगेन अगर आप ICSE लेते हो या स्टेट बोर्ड लेते हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिलेबस स्टिल रिमेन्स द सेम, बट द बुक ऑफ रेफरेंस चेंजेस. एनसीईआरटी के बुक से अराउंड 80 to 85% आपका नीट का पेपर बनेगा. वेरेज अगर आप स्टेट बोर्ड का सिलेबस पढ़ते हो, सिलेबस सेम है, बुक डिफरेंट है, तो यू विल आल्सो हैव टू स्टडी एनसीईआरटी बुक फॉर क्लियरिंग योर नीट. इफ यू टेक ISC there is no fixed book, तो आपको publications होंगे. there is Selina publication, there is Oswald publication, different publications से बुक आपको परचेस करने पड़ेंगे और उसमें से पढ़ना पड़ेगा. so if I compare side by side syllabus of CBSE and ICSE, it is the same, कुछ difference नहीं है. but फर्क सिर्फ इतना है, NCERT टेक्स्ट बुक है, बोर्ड ने दिया हुआ एक टेक्स्ट बुक है जिसमें से बच्चों को पढ़ के एग्जाम देनी है. whereas ISC में कोई बोर्ड ने कोई बुक नहीं दिया है, बस टॉपिक दिया, उसमें से आपको देखना है. So that is the difference. Again, if you want to take a college which is good but it is far away, you can still take it. It is completely your choice. मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसे टाइम पर आप वो कॉलेज ले जो आपके घर से नजदीक हो, बिकॉज कॉलेज एडमिशन भी एक धक्के में नहीं होगा. You'll have to go many times to that place for merit list, first list, second list. There are many things, but all these things will be cleared to you very soon by the board because आपका रिजल्ट नहीं आया. all this tension will be happening after you get your results in hand. Okay, let's move to the questions now. Yes. I would first answer the questions that were asked, and if you all have anything more, you all can, instead of putting it in the chat box, we would like you to switch on your mic. So let's first clear out the questions that have been asked earlier and then move on to the new one. Okay, shall we do that, sir? Yeah, sure. Okay. There was one question which was repeated quite often, and it was how many hours for NEET and how many questions. I'll just repeat that: 180 questions for 3 hours, 90 questions from physics, chemistry, and 90 questions from bio. As I told you, कि कुछ fix नहीं है कि 45 इसमें से 45 इसमें से 90 overall biology में से आएगा, right? Then क्रिश का क्वेश्चन है कि I have heard for aviation stream we have to do aeronautical engineering. It's not compulsory. As I said, BSc जो मैंने बोला ना, BSc aviation में भी होता है, right? BSc happens in aviation as well. So you can do BSc aviation and then look out for your license. There was another question from Nidhi as to talk about embryology. As you would have seen it in the introduction, that I am an embryologist. So what does an embryologist do exactly? If you have already studied about test tube babies and IVF in your class 10, it was there in all the boards, CBIC and state board. So IVF के बारे में पता है. अभी IVF में जो पेशेंट से डॉक्टर डील करता है, मतलब अगर कोई फीमेल है, उसके एग्स निकालने हैं या उसके अंदर एम्ब्रियो इम्प्लांट करना है, तो ये डॉक्टर करता है. बट वो एग को और स्पर्म को मिक्स करने का काम, या वो पूरे जो पूरा the whole process of making the embryos, why are they called embryologists? Because they know the art of making embryos, right? So पेशेंट को डील करने का एस्पेक्ट इज द डॉक्टर, एंड जो पूरा प्रिपरेशन है, जो पूरा उसके पीछे का जो बिहाइंड द सीन है, दैट इज द एम्ब्रियोलॉजिस्ट, राइट? फॉर एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट यू नीड टू हैव डन योर मास्टर्स, पहले मास्टर्स करना पड़ेगा. देयर आर universities which do MSc in embryology as well. So that is Manipal in South India में एक ही है, मणिपाल में ही होता है.
अगेन द इन्वेस्टमेंट इज मोर, जैसा MBA में कैसा लिखा हुआ था कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा बट रिटर्न भी आता है उतना वैसे, so the investment is more in this case but then it does give you return, right? Then after doing 2 years post graduated, abhi if you want to do I'll take this question and I'll switch to sir for the rest of the questions because I've been talking for so long. So, if you want to become a neurosurgeon, first you get your MBBS done. हर एक जो specialization होता है ना, gynecology, ENT, आई स्पेशलिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, हर एक स्पेशलाइजेशन आपको बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन में करना है. मतलब आपका जो MBBS होगा वो आपको ग्रेजुएट बनाएगा, राइट? वो आपको हर एक पूरे ह्यूमन बॉडी सिखाएगा, क्योंकि अगेन हम ऐसा तो नहीं बोल सकते आप डॉक्टर बन रहे हो तो ऐसा नहीं बोल सकते अरे यार ये पार्ट मैंने ऑप्शन में छोड़ा था, राइट? तो फर्स्ट ग्रेजुएशन में यू विल लर्न एवरीथिंग इनसाइड आउट अबाउट द ह्यूमन बॉडी, एंड आफ्टर दैट इन योर पोस्ट ग्रेजुएशन यू कैन डू बिकम अ न्यूरोसर्जन, that is called MS, Master of Surgery, right? There are two things, Doctor of Medicine and Master of Surgery, MD and MS. तो अगर आपको सर्जन बनना है, ऑपरेशन करना है, राइट? जैसा वो कबीर सिंह में बोलता है सर्जन बन, हाथ में खून आता है, अच्छा लगता है, all of that. So if you want to become that, you need an MS degree which is done after MBBS. तो MBBS होगा, फिर वो जो नीट UG लिखा था ना वो PG हो जाएगा, वापस नीट देना पड़ेगा और उसके बाद आप MS कर सकते, right? I would hand over the thing to sir. Sir, please continue. I'll drink some water. Okay, sure, ma'am, sure. I'll take away your questions. So I think Riya, your question has been solved. After 2 years, you can do post graduation in neurosurgeon. Then Krish has asked, sir, for the science as normal 10+2 science stream, which are the best colleges you prefer? As I told you, there are certain colleges for sciences that are very, very good, and like Mithibai college is very good, and but all the colleges that are very far from you right now. So आसपास में अगर कोई अच्छा कॉलेज बोलना है तो you have Royal College, but again there is too much of strict attendance and everything. Colleges के लिए for this year your question will remain still at stake because you have not received your mark sheet. Once you receive your mark sheet, then you can evaluate all the possible choices that you have. Then we have a question. So okay, how many years total for neurosurgeon? So you have 10+2, 2 years, then you do NEET UG, then you have 5 years of MBBS, 6 months to 1 year of training, then you become a doctor, and then you can do your specialization for 2 years. So it is 10+2, 12, 12 के बाद 5 या 6 years, then more 2 years, then at that time you can be a neurosurgeon. But after you do your MBBS, you can still practice surgery, okay, from any of the colleges or government hospitals or even private hospitals. Then see, there is a question that says law commerce के भी कर सकते हैं. Yes, you can do law via commerce. Yes, you can do. Yes, you can do law from commerce as well. LLB can also be done from science as well. There are I know people who have switched 11th, 12th BSc करने के बाद they have done law, and again that is a bachelor's degree. You don't need a proper subject का knowledge. That is totally altogether a different subject. But you can definitely choose from any of the streams. You can also do law from arts. Then there was a question related to automobile as well. For automobile engineering, you have to do you have to clear your CET or JEE to get into engineering, and then you can do any sort of engineering, and then you can master in automobiles. For that also you'll have to do a bachelor's degree. For usually automobile engineering का as such कोई course नहीं होगा. After doing your BE, you can do masters in automobile. So mechanical engineering है आपका अगर degree, तो that will give you an upper hand. Since the years are vast, see, MBBS in general is a vast course that requires 5 to 6 years, and neuroscience के लिए you will require more 2 years. Okay, अगर आप कोई भी फील्ड में MD करते हो मेडिकल रिलेटेड फील्ड में, तो इट विल ऐड ऑन 2 to 3 years more. बट डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि you won't start earning by then.
once you clear NEET, once you become a doctor, you can actually start earning if you are doing your thing side by side, and then आप side by side PG के लिए clear करके फिर आप MD बन सकते हैं. और जहां आप post graduation करेंगे वहां पर भी आप डॉक्टर की तरह ही सर्व करेंगे. You will be serving there in a hospital and also you will be getting your master's degree. डॉक्टरिंग साइड बाय साइड हो सकता है. सीपीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं, सीपीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है. सीपीटी का भी पैटर्न चेंज हुआ है, तो अभी वो नॉर्मल बोर्ड एग्जाम जैसा एग्जाम है. पहले वो एमसीक्यू बेस्ड होता था, अभी वो बोर्ड एग्जाम जैसा एक्सटेंसिव सिलेबस है. यू विल हैव कॉमर्स, अकाउंट्स एंड एवरीथिंग, एंड देन आपको सिलेबस से पढ़ के फिर आपको देना है. सीपीटी भी 12th के बाद आएगा. I'll take the initial questions first. About the classes, somebody has asked me. Any classes is fine, but make sure अभी आप 11th या 12th में आप अपना टाइम, आपका पैसा और आपके एफर्ट्स कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मेक श्योर यू सिट फॉर डेमोज, यू नो द क्लासेस इन एंड आउट, एंड देन ओनली द बेस्ट एक्सपीरियंस यू कैन हैव इज आस्क द पास्ट स्टूडेंट्स. जो बच्चे वहां से पढ़ चुके हैं आप उनसे बात कर सकते हो और फिर आप डिसाइड कर सकते हो. राइट नाउ आपका वो एज नहीं कि आप 1-2 साल तक और ट्रायल और एरर खेल सकते हो, because whatever you select from here, that you'll have to invest your time, money and effort, and that is very important. अगर ये तीनों चीजें वेस्ट होती है तो so make sure you do thorough research and then you enroll into any classes, any name. Okay, it is all up to the decision lies still with you, but make sure try करो सब कुछ, know where you are investing, and the best thing to know is ask the students who have already been from there, and उनसे बात करके आपको best opinion मिल जाएगा. There's another Let's see question other questions. which says that I want to become, Karthik has said that he wants to become an air hostess. Yes, this is very much possible. It is not just that females are air hostesses. There are people in the cabin crew, and there are direct courses for it. You can even join the courses after your 12th standard, but you need to have very good communication skills, although they train you in every way possible to handle the cabin crew, right? So yes, even being a boy you can become, and it is also one of the most popular things these days. And there is no there was a notion regarding it earlier, but now people are more open to that part of a career as well, right? Yes sir, you can continue. Yeah, okay, then there was one more question, why chemistry is hard. See, hard and easy, what might be hard for you might be easy for somebody else. No subject is easy, I would say. बच्चों को बचपन में लगता था EVS बहुत easy है, EVS बहुत easy है. तो अगर आप 11th-12th में इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं या इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, यू विल नो कि सिर्फ EVS में सिर्फ पेड़ लगाओ, प्लास्टिक मत यूज करो, वो सब नहीं है. देयर इज मच मोर टू इट. यू नीड टू लर्न a lot of things. So no subject is easy. It is upon how you take it. आप किस तरह से उस पर प्रिपेयर करते हो. The reason that SWOT analysis term was given कि आप अपने weakness को देखो कि कहाँ पर आप weak हो और accordingly you can work on it. And there was a question कि 10th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा. Yes, I think so. Miss answered this. But still we would suggest कि आप डिप्लोमा नहीं करके आपका बेस क्लियर करो 11th-12th वाला, and then you go to a bachelor's degree. There is another question from Nidhi which goes that is NEET essential for BSc? No, NEET is not essential. NEET is only a medical entrance test. It is not required for doing BSc in any stream. There your state board scores matter. Okay. So Okay, please so check if there is any one question from Vansh. You are planning to do computer science abroad after 12th. See, if you are planning to do anything from abroad, your 2 years, whatever you do from any board, it is helpful to you. But make sure if you're doing from, just know what the syllabus is, what the pattern is. If you're doing computer science from abroad also, make sure you know the colleges where you're going. Because what happens is many students, they go from here to abroad, they get into college there, and then there are no jobs after doing that course. So there is no point if you don't have a job after doing the abroad course. So make sure you know the colleges where you're doing your course. Also, if you're doing 11th-12th from here, you can select any board. If you are planning to do from abroad, that does not matter. If you do ISC board also, if you do CBSE board or state board, does not matter at all.
But again, if you're planning to do from ICS board, make sure you'll have to work a bit more harder, because there will be 2 or 3 textbooks which you need to refer to clear your course. Any more questions? If we have by chance missed, I have tried to check and recheck again, but if we've missed your question, please say it on the microphone or just paste it in the chat so that it comes to our notice again. Yeah, we can We really take that question apologize for again as not well. taking it at that time, but कैसे होता है ना, अगर एक एक क्वेश्चन तभी आंसर समझाते समझाते आंसर करेंगे ना, तो बाकी सब जो सुन रहे हैं उनका लिंक टूट जाएगा कि ये मैम क्या बोल रही है, अभी तो कंप्यूटर साइंस बोल रही थी, अभी एविएशन पे चली गई, ऐसा. So that was the sole reason Exactly. of keeping the things later on. Yes, sir. Yes. And it becomes difficult because there are some questions in direct message, there are some questions in everyone chat. So the listener becomes confused, अरे ये अचानक कहाँ से commerce के बारे में आ गया. So that is the reason we told that we'll take the questions at the end so that everybody can listen to it properly. So any other doubts which you might have, or any other question that we have missed? Pushti has I think raised her so. hand. Yes, Pushti. Okay. For increasing aptitude in science, what should I do? Very good question. So would you like Okay, to ma'am. answer this? Will you like to answer that? Okay, I'll take Ma'am, it. you answer this. Okay. So, for increasing your aptitude in science, this is a very beautiful question that I've asked. If you want to know whether, oh my God, who is this? We are immune to this already because we've been teaching online for the past 1 year. But yes, coming back to the question, if you want to increase your aptitude in science, one thing is you try to find out the reason behind everything, every possible thing around you, right? That why this happens in this way. Try to question everything and try to find out those answers, right? This is the preliminary step from which your journey of science would begin. The other thing is there is a lot of content on YouTube related to experimental sciences. Because of the pandemic, you all have not got the chance to go to your labs. Although पहले भी बहुत limitation था, I've always had students come up to me and say, "मेरे हमारे स्कूल में माइक्रोस्कोप लगाओ ना, मेरे को देखना है," या हमारे स्कूल में लैब जाने नहीं देते, टच करने नहीं देते कुछ, right? So this is a common concern, and why don't they allow? स्कूल वालों की भी गलती नहीं है, हम खतरनाक स्टूडेंट्स हैं. 10th में लोगों के ट्यूबलाइट फोड़ने के प्लान होते हैं, तो तुमको HCl नहीं दे सकते हाथ में, है ना? इसके लिए स्कूल स्टूडेंट्स आर मोस्टली नॉट अलाउड. But of course, if you take science, so practicals will be a very important part of your studying, and you will have to compulsorily attend practicals. So वो सारे videos देखो कि you know how you can increase, how do things happen, and you know how certain experiments like the basic thing, litmus paper सबने सुना हुआ है कि वो pH check करता है. Do you know this thing कि you can make litmus paper at your very home, right? कैसे बना सकते हैं? पता है, red litmus. This is just an example that I'm giving you. Just take a strip and rub rose petals over it, and that would turn into a red litmus paper. Litmus natural चीजों से ही बनता है. So something as simple as a litmus paper test can be done at your home. So watch these videos, try to find out these stuff, and you know, you might just understand where you are, what thing gets you more excited कि oh wow ये ऐसे हुआ. जो चीज में ज्यादा excitement आता है, that means you love it more and you want to do it the next time. Yes. Right? I hope I've answered your question satisfactorily, Pushti. Yes, thank you. Okay. Next. Okay. Is there The any next question, Ria has asked about biotechnology. About biotechnology, you can do bachelor's in biotechnology. You can also do master's in biotechnology. Okay, biotechnology is a field, is an upcoming field. Okay, although ये field काफी time से मुंबई यूनिवर्सिटी में हो रहा है, but it is still very new because more and more researches are going on. And biotechnology is a broadest term. मतलब ये बहुत बड़ा term है साइंस से, बायोलॉजी के फील्ड में. तो कोई भी चीज आप आसपास देख रहे हो, be it making vaccines, being making medicines,
making foodstuffs to everything, सब में biology का base आएगा. And biotechnology, there is obviously a bachelor's degree and master's degree. Also, you can apply for master's degree abroad and you can continue biotechnology there. If you ask me personally, abroad mein there are more scope for biotechnology if you take the right university. You can also do your PhD or doctorate in that after that. But for biotechnology, bachelor's, master's, and then a higher degree. Soumya has a question that is it a good option switching to abroad for MBBS? We would recommend no, because it is very expensive. You have to do your MBBS for 5 to 6 years, and to sustain in abroad for 5 to 6 years in their economy, udhar ka the value of their money is of course much more than what we have here. So you will have to spend for 5 to 6 odd years. इसके लिए कोई भी है ना बैचलर्स नहीं करता, सब लोग मास्टर्स. तुमने जितने भी लोग देखे होंगे ना के फॉरेन गए, वो हमेशा मास्टर्स करने गए. क्यों? क्योंकि बैचलर्स इंजीनियरिंग का ड्यूरेशन 4 साल का है, मेडिकल का ड्यूरेशन 6 साल का है. तो आप इट इज बेटर टू go there for masters rather than bachelor's which is a 5 year course. तो कैसे होगा? आप बैचलर्स करके जाओ, फिर 2 साल कर लो, फिर उधर जॉब मिल जाए. That is a better option than 5 years pending there. So it is better to do it in India. You will see a lot of Russian universities trying to call you, but again, please see and please check where you are investing your money in. Okay, especially for medicine, the Okay. Russia thing is. Yeah, post graduation is better there. And also, if you're planning to do medicine from outside, if you have enough resources, if you know whether that college is good or not, you can definitely do that. But mostly, if you're planning to settle there, that is a good choice. If you're planning to settle there, you can opt for MBBS there. But if you're trying to do the MBBS there and then you're planning to settle here, it becomes difficult because when you come to India again, you'll have to pass that entrance test if you want to practice in India. So Vansh has asked me question about the colleges. Okay, see, CBSE, ICSE colleges, good colleges near us where we stay, near Mira Road, Bhayandar, Dahisar, Borivali. There are certain colleges in Borivali. There is Rustomjee College, which is a good ICSE college. And there are many new colleges. They have just started a year or two later. So you can check. There are many colleges which are very new, like they have just operated for the last 2 years. So 2 साल में पता नहीं चलेगा whether that college is good or not. But again, if you want to see a college which is near you, you can obviously for CBSE you have 7 Square Academy. 7 Square, you're again the same management, 711 School or 7 Square Academy. 7 Square as CBSE, they teach 11-12 there. But again, as I told you, they are comparatively quite new colleges. So whether they are good or not, we can't say. You'll have to research a bit, because right now I have my students who are currently in 7 Square College, and right now, so everything is happening online. So to judge a college by online teaching is slightly difficult, and they are comparatively new. So maybe this year is the second or third batch. So आसपास अगर देखा जाए तो you have for CBSE 7 Square, that is a good college. And for ICSE here options are very limited. You have Global, obviously. You also have Rasaz International, which they are planning to start. You have GCC, which is again planning to start ICSE, but I don't know how, by what time they will get their certificate and they will start ICSE. But there are certain colleges in Borivali which are very good. There are also colleges, if you go a bit beyond, you have Viti International in Kandivali, Malad. So that colleges are also quite good because they are old enough. They have many batches who have passed 11, 12 from there. Okay, Krish has a doubt. Krish has raised his hand. Krish, you can unmute yourself. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Ma'am, I have a question to you. Ma'am, as you told that we have to do graduation for the aviation stream, but ma'am, I have heard that for commercial pilot, it expenses too much. So my colleague has recommended me, so you can do from Air Force. So means as I'm studying from Air Force, I'm going, so I have to do ND exams. So means can I continue side by side ND exams and my college studies?
Yes, yes, of Can I? course. NDA is an entrance that you give after your 10th, 12th, right? So Yes, you can, the syllabus is more or less NCRT based again, and it's not exactly like NEET, but yes, you will have to study bio and everything for NDA as well. And yes, this is a very good option because there are two things that you are doing. You are fulfilling your dream of flying, and you are also serving the nation in this way. So nothing better than that if you can do it. Uh, If you are planning to do NEET, NDA, NDA is quite good if you do it very well. So I have a colleague of mine who is right now serving for the country, and he has done his MBA. He has cleared all the exams. You need to, because see, NDA का culture right now Mumbai में इतना नहीं है. So if you go to the smaller towns, the 2 tier, 3 tier cities, there NDA has a lot of craze. यहाँ पर IIT, JEE, Commerce, CA, CS ये सब का craze ज़्यादा है. So NDA is also a national level exam. You also need to clear the physical fitness test and a lot of things. Again, their syllabus is also very updated. They update every time, every 2 or 3 years, they update the syllabus. If you're doing aviation, make sure you have your maths and physics base very clear. And also you will have to work on your body, work on yourself. But that is the thing that you can work on. The mental aspect is more important here. You need to know your basics very well, and then you can definitely do this. This is a good option. there's another Entrance exam, question. any preparation, entrance exam ka any preparation is to be done after 12th, 10th only. Your 11th, 12th, this 2 years you prepare not just for your 12th exams board, but you prepare for entrance exam as well. Okay, that is the baseline. If you go to northern states, वहां पर people take actually a break of 1 year after 12th to just prepare for NEET or just prepare for entrance exams. वो कल्चर महाराष्ट्र में या बाकी सारे स्टेट्स में नहीं है. तो यहाँ पर सबको ऐसे लगता है कि अरे हम 12th भी साथ में दे देंगे, एंट्रेंस भी क्लियर कर लेंगे, एक ही साल में नहीं होगा. यू नीड रिगरस ट्रेनिंग, रिगरस प्रैक्टिस. सी जो भी एग्जाम जितना पुराना होता है ना, विच मीन्स दैट इज स्टडीड वेरी वेल, मतलब उसको बहुत अच्छे से पढ़ा गया, लोगों को पता है ये. सो as ma'am told you that last year 2 people got 720 out of 720, and trust me, that is very difficult to achieve. Even if experienced teachers give that paper, even from for them it is difficult to score out of out. But if a student can score it, imagine the level of practice and imagine the level of dedication that has been gone through in clearing that. So yes, to answer your question, you need to prepare from 11th itself. That is the reason we suggest that you take a CBSE board, because that will give you, you don't have to study NCERT book again then. Yes, ma'am, over to you. Yes, Pushti, your question. For science, do we still have integration system? Yeah, it is still there. You can, take integrated coaching as well, wherein you don't have to go to a college. Your classes become your college, right? Just as sir said, one thing that you keep in mind, that wherever you are investing your money, just check, and what is the best way to check whether it has produced any past students. For example, if you want to do JEE, देन यू शुड सी के उसमें से कितने रैंकर्स आए हैं जहाँ पे भी आपको इंटीग्रेटेड कोचिंग लेना है या जो भी लेना है. जस्ट सी के कितने रैंकर्स प्रोड्यूस किए हैं वो जगह ने, right? And accordingly, you can make your decision, but you still have that system and it is going on, right? There is one question from Nidhi as well, that for embryologists, do you need to do NEET? No. Embryologist, the criteria is you should have done your bachelor's and you can then do your master's in embryology. You can also do your master's in a normal life science or any field, and then after that also you can take hands-on training. Something that is hands-on training means hands-on training मतलब क्या, the way to understand the way of handling the machine on which we work. It's called the XC machine, और वो machine itself 17 lakhs का आता है, right? तो obviously कोई भी ऐसे तो आपको नहीं देगा, बहुत सारा experience चाहिए उसको handle करने के लिए. So that experience of how to handle that machine is what you are taught in that training. So NEET is not required. You need to do masters.
right? But it is as tough as NEET, I can say. Next question is from Riya. Sir, over to you. Okay. What is a good score? A very good question, because it depends upon what your aim is. If you want to get admission in AIMS, your good score starts above 650 or above 670, I should say, for this year, because there is a lot of time and people are preparing for 1 or 2 years extra. So even they will be appearing. So around 670 marks or 650 marks above you can score. But if you want admission in a good college, good government college, any score above 500, 550 will suffice. Okay. If you score below than that, then your area expands. So आपको फिर मुंबई पुणे के अलावा जो 2 टायर सिटीज होगी, औरंगाबाद, अहमदनगर, नागपुर, यहाँ के कॉलेजेस में शायद एडमिशन मिलेगा. It is better if you take in government colleges because the fees is less, and government college mein milna it is difficult, because if you get admission in government college, that is purely because of your merit. So you need to score minimum about 480 to 500 if you want to get admission in a good college. And if you're ready to shift, because if you want to do higher studies, आप सिर्फ घर पे बैठ के नहीं कर सकते, आपको घर के बाहर शिफ्ट होना पड़ेगा. If the college is far away, you'll have to take the hostel facilities and everything. But a good score is anything above 500, 550 will get you into good college. That is out of 720. Okay. And every year this good score will change, because it all depends upon the percentile system. तो जितना टॉपर को मार्क्स आता है उसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करना पड़ता है. So if the topper scores 720, तो आपका definitely 580 से 600 के बीच में आना चाहिए if you want to be a student of a government college. Any other questions? Relative grading, that is called relative grading. मतलब जो टॉपर फर्स्ट रैंकर को जितना आया उसके हिसाब से तुम्हारा पोजीशन डिसाइड होगा. Any other questions? I think we are done with the questions. Yeah, I think so. We are done with the questions. Anything anybody would like to ask, you can surely ask, or you also have our numbers. You can connect to us. We will try to give you all the information that we have. Okay. If anything related to any other field expert, if you want some expert advice from a CA or CSL, try to get my contacts and I'll make sure that you get your answers. हम ट्राई करेंगे अपने हिसाब से, आपको अगर जो भी क्वेश्चंस जो शायद हमें ना पता, हम किसी और से पूछ के शायद आपको बताएंगे, या हम डायरेक्ट उन्हीं से आपको कनेक्ट कर देंगे. So I hope you guys like the session, and this was a session just to interact with the older students, the new students, and just to clear all the fuss around this. And I hope we were able to clear your doubts. Soumya has a Yes, question. the session was very interesting and helpful for us. Thank you. Thank you, Pushpa. Thank you. Thank you. Okay, we have one more question right here. Okay, any nearby college that you consider is good for preparing NEET? See, colleges don't prepare you for NEET. NEET ka preparation you do by your own self, or your so-called classes will make you do your NEET. Colleges will give you HSC ka certificate or CBSE ka 12th या ISC ka 12th. Colleges do not prepare you for entrance exam. They will just complete the syllabus and they will prepare you for the board exams. For entrance exam, the syllabus remains the same, but the approach changes. It is like cricket same है, मगर टेस्ट मैच का प्रिपरेशन और T20 का प्रिपरेशन अलग होता है. उसी तरह से colleges will prepare you for board exams, whereas the entrance exam के लिए you either prepare by yourself, or there are teachers, there are classes which help you in doing so. So no matter you take admission in any college, any integrated college, that does not matter, that does not depend upon your NEET score. जो NEET का मार्क्स है वो आपका खुद का है, उसमें कोई कॉलेज या कोई स्कूल आपको इंटर्न्स वगैरह कुछ नहीं देगा. दैट इज ऑल यू गोइंग देयर, सिटिंग फॉर 3 hours, मार्किंग योर क्वेश्चंस, labeling it, answering it, that's it. So colleges, no matter what colleges, be it integrated, state board, CBSE, ISC, NEET ka marks won't depend on any of this. Any other questions?
Thank you, Anjali. Thank you for the comment. Chris has also commented that thank you for the beautiful session. It's in the private chat. So thank you, Chris, for the compliment. Thank you, Anjali, ma'am, for the Thank comment, you. and thank you all everybody for joining us. It was a great session. Again, there are certain names that they have not filled the form. It will be great if you fill the form so that even we have a number that how many students appeared. Yeah. And any other further doubts, you have our numbers, you can contact us and we'll be happy to help you there as well. We try to cover as much in the scope of the thing, but of course, if you want details, this thing, we can give you an idea about it. We tried our best to cover all points as much as we could. Thank you so much, Ria and Nidhi. Both of them have Thank you. commented in the chat. Thank you so much. Okay, sir, do we end the session here? Yeah, sure, ma'am, sure. Okay. Thank you, everyone. All the best for your future. Vansh has also messed this. Thank you everyone for joining us. All the best for whatever you select. Just do great in whatever you're doing. All the best. All the best, everyone. Bye.